Okay. Yesterday we have studied about the chordates, their characteristics, their classification, then their classification into vertebrates, how vertebrates are classified. So, can you explain me the classification only? कितने कितने parts में कैसे कैसे division है? Can you explain me? Whole chordates are divided into how many groups? Ma'am, I have not remembered. Okay. So yesterday we talked about that whole chordates are divided into two main groups. One is craniata, another one is acraniata. Craniata means they are having protective covering for their brain, and acraniata means they are not having any protective covering for their brain. Now, let us move back to the slide also. Classification, yes, to this. So this acraniata one is further divided into urochordates and cephalochordates. So these urochordates were क्या इसमें क्या था, नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट था, और वो भी जो नोटोकॉर्ड था टेल रीजन में प्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस ओनली, एडल्ट फॉर्म में नहीं था. Then cephalochordate में notochord is present throughout the life cycle and it is present on the head. Okay. Then no further division of this acraniata. Now craniata is divided into two main divisions, agnatostomata and agnatha and gnatostomata. Agnatha वाले क्या थे? Those organisms which are jawless, means they are not having any jaw. And division gnathostomata, those organisms which are jawed, means mouth is bonded by jaw. Then division agnatha is further divided into two groups, but we will actually study one. क्यों? क्योंकि एक जो है ostracodermy, that all the members, plecodermy, all the member of that group are extinct. So हम लोग एक ही क्लास पढ़ते हैं which are cyclostomata. Then cyclostomata का characteristics क्या है कि circular mouth होती है and mouth are suctorial, they are marine, they are having paired appendages, and examples में क्या था, petromyzon और hagfish. Okay, myxine. Then further division is what? Gnathostomata. Now this gnathostomata is further divided into two main superclasses. One is Pisces, another one is Tetrapoda. Pisces complete aquatic organisms हैं, and Tetrapoda those organisms which are having 4 legs. Okay, so this now this Pisces is further divided into what? 3 classes: Placodermy, Chondrichthyes, and Osteichthyes. This placodermy is what? Extinct animals and extinct members are there. Then Chondrichthyes, cartilaginous fishes, Osteichthyes, bony fishes. Further, Tetrapoda is divided into 4 classes: Amphibia, Reptilia, Aves, and Mammalia. So this classification you have to learn. Just give me a minute. So any doubt? Again in the classification, अगर कोई doubt है, you can ask. If you will remember the classification, you will always be able to do the evolution chapter. Okay, means these classification is important based on the evolutionary point of view. So shall we start about this fishes? Class Chondrichthyes means cartilaginous fishes. Okay, first we will see the superclass Pisces. What are their characteristics? Superclass Pisces. First characteristic is what? All members are aquatic. Have you seen any Pisces which are not aquatic? Then next point, they are having a streamline body. Okay, body is having what? Streamline means उनके body में will always be found a streamline. एक line पाई जाती है. That line usually separates and allow them to stay in the aquatic environment. Okay, so streamline body, line body. Next character, easy one, scales. They are having scales. Next also fins present. You can write like this: scales and fins present. Next character is what? They are having nictitating membrane. What is this nictitating membrane? It is the protective covering of eye, which enables these aquatic organisms to live in water. हम लोग पानी में नहीं रह सकते. अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर if we are going into any water body, we need any glasses on to move into the water bodies to protect our eyes. But God has created them as like कि उनके पास आंखों के आगे already protective covering है, and that protective covering is called as what? Nictitating membrane. When you will study the evolution chapter, you will find out that in humans nictitating membrane क्या है? एक vestigial organ है, क्योंकि ये reduce होके खत्म हो चुका है. If you closely watch over your eye, you will find in the
pinkish side, this side of eye is very reduced, a very little bit of pinkish tissue will be seen. वहीं से nictitating membrane का formation होता है. Okay, so these are not developed in humans. Nictitating membrane are found for what? Which help them to live in. Okay, पहले ऐसे लिखते हैं. Nictitating membrane है क्या? Are found as a protective covering of eyes, which allow them to live in the water, to live in aquatic environment. Okay. Next ka any important characteristic can you tell? See, evolution point of view se again, fishes ka chamber, two chambered heart, amphibians are having three chambered heart, reptiles are having three chambered heart, exceptions are there in reptiles. Then mammals are having four chambered heart. So ये हार्ट कितने होंगे? टू चैम्बर. यहाँ फिश चेम्बर हार्ट, टू चैम्बर. एंड ये इसको बोला जाता है क्या? वीनस हार्ट. नेक्स्ट वन इज, next characteristic can be they are having what? Mesonephric kidneys. Mesonephric kidneys means their excretory organ will be what? Ammonia. Then they are anamniotes, क्योंकि जब ये एग लेइंग मैमल्स हैं, ये एग ले करते हैं, तो जितने भी एग में हैं, इनके जो एग के अंदर यू विल सी इन रिप्रोडक्शन चैप्टर आई गेस. सो एग के लेयर्स होते हैं, दैट एग के शेल्स आर लेयर्स, तो उसमें एक लेयर का नाम होता है एमनियन. सो these fishes are not having that layer in their eggs. That is why they are called as amniotes. Amniotes. Next, nictitating हो गया, mesonephric हो गया, heart हो गया. Okay, yes. Another one is they are having what? 10 pairs of cranial nerves. Cranial nerves. Now, in the mammals and most of the members of tetrapoda, they are having 12 pairs of cranial nerves. But these superclass Pisces means जितने Chondrichthyes या Osteichthyes हैं, they will be having what? 10 pairs of cranial nerves. Then they respire through what? Gills. Respire through gills. Okay, and skull. See, our skull, we are having dicondylic skulls. Means अभी ये condyles का figure भी in higher classes you will see, no need here. So these are the Pisces, they are having monocondylic skulls, means their skulls are not divided into any parts, but our skulls are divided into two parts, इसलिए we are dicondylic and these superclass Pisces are monocondylic. Okay, so they have monocondylic skulls. Okay, I think this much is enough. If I'll forget anything, I'll write more. Okay, now they have been divided into two main classes. They are divided into two main classes. Now, Faika, can you name these two classes? What are these two classes? Okay, Sana, can you name them? How many classes they are divided? Name the two classes. Okay, no problem. As in the classification also, I have told कि super class Pisces mainly दो में ही division है. तीन division सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जितने जो division है, all the members of that division are extinct. That placodermy. So we are not going to study that placodermy one because all the members are extinct. We will study only Chondrichthyes and Osteichthyes. Chondrichthyes ones are cartilaginous fishes, Osteichthyes one are bony fishes. We will study in the comparison only. फिर वो हम लोग बाद में देख लेंगे characteristic. Okay. Now can you tell Sana? Speak it out. क्या है? See, Chondrichthyes one are also first one. ये लिख सकते हो. They are also called as cartilaginous fishes, and they are also called as bony fishes. Any doubt till here? इनका एक और नाम भी है, दोनों का फेमसली एक और नाम है. Chondrichthyes are called as elasmobranch. And this Osteichthyes one are also called as telost. This spelling गलत है. These spellings are so tough sometimes. Telost.
Yes. Kilo. Okay, no. Again, spelling is mistake. Kilos. Yes. Now these are fine. So chondrichthyes ones are also called as cartilaginous fishes or elasmobranchs, and osteichthyes ones are also called as bony fishes and telotes. But these elasmobranch and telotes are higher level terms, so no need to remember. You only can remember about cartilaginous and bony ones. Second feature are इन लोग को कार्टिलेजिनस फिशेस क्यों बोला जा रहा है और बोनी फिशेस क्यों बोला जा रहा है. सो दे आर हैविंग cartilaginous exoskeleton. Cartilaginous exoskeleton. Exoskeleton. That is why they are called as cartilaginous fishes. They are having bony exoskeleton. Next one, third one. Third one can be what? Notochord. Sorry, notochord से पहले marine वाला ले लेते हैं. Cartilaginous ones will be found mainly in marine water. Mainly in marine water, and here mainly, not mainly, they can be found in both in marine plus freshwater forms. Fourth, notochord क्या है, इनका persistent रहता है throughout their life in the cartilaginous ones, and bony ones में क्या होता है, notochord is replaced by what? Vertebral column. So notochord is persistent throughout their life. And यहाँ पे क्या है, notochord is replaced by vertebral column. Next, they are having what? Placoid scales. जो placoid scale modified हो जाता है into modified हो जाता है क्या? Backward direction of heads. Okay, so sorry, backward teeth formation, as I said head. So placoid scales means जो scales हैं इनकी body पे, like if somewhat fishes are like this, so इनकी body पे क्या रहते हैं? Scales रहते हैं, छोटे 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 छोटे. तो ये स्केल्स में भी ना बहुत सारा टाइप होता है. प्लेकोइड होता है, हेट्रोकोइड होता है, एंड टेट्राकोइड भी होता है. सो बहुत सारे हैं, ठीक है. सो इनके पास जो प्लेकोइड स्केल है, मतलब ये कार्टिलेजिनस फिशेस के पास बेसिकली प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, और वो प्लेकोइड स्केल्स मॉडिफाइड करके जो पीछे के दांत होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है. बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ का फॉर्मेशन करते हैं. एनी डाउट कि कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकोइड स्केल का क्या होता है? यस सनम, यू कैन स्पीक. मैम एक बार फिर से समझा दीजिए. ओके, सी, फिशेज आर हैविंग वेरियस टाइप ऑफ स्केल्स. स्केल्स का भी बहुत सारा टाइप है, मीन्स 4 या 5 है. तो उसमें से प्लेकोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल, टिनोइड स्केल, ये सारे भी हैं, ठीक है. सो जो प्लेकोइड स्केल है वो कार्टिलेजिनस फिशेज में पाया जाता है, एंड दैट प्लेकोइड स्केल्स आर समटाइम्स मॉडिफाइड इनटू व्हाट? बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ. मतलब जो पीछे के दांत हैं फिशेज में, उसमें कन्वर्ट हो जाता है क्या? प्लेकोइड स्केल. प्लेकोइड स्केल कहाँ पाया जाएगा? ऐसे आगे की तरफ हम लोग बनाते हैं ना. सो ये आगे की तरफ जो ये है, इनका जो स्केल यहाँ ऐसे शुरुआत करते हैं, तो ये कुछ स्केल्स क्या करती हैं? पीछे के दांत बनाने की हेल्प करती हैं, ठीक है. So that placoid scale in cartilaginous fishes are transformed into backwardly directed teeth. आप समझ में आया? यस मैम. ओके. एंड इसमें ऑस्ट्रिक्थिस वाले में क्या होता है? प्लेकोइड स्केल नहीं होता, साइक्लोइड स्केल प्रेजेंट होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है. ओके, प्लेकोइड स्केल्स आर मॉडिफाइड इनटू बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ. शार्प टीथ का फॉर्मेशन करती हैं जब, जिसके पास कौन से फिशेस हैं जिनके पास शार्प टीथ होता है, टीयरिंग वाला? थिंक अबाउट इट, मेनी फिशेस आर देयर, और फेमस एग्जांपल भी है शार्क. शार्क. सो शार्क का क्या रहता है? टीथ बहुत बड़ा बड़ा रहता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड रहता है. देन अब जिसके पास शार्क है, टीथ है, इतना बड़ा बड़ा टीथ है, तो ये तो प्रीडेटर्स होंगे ही. तो प्रीडेशियस यानी कि प्रेडेटर्स हैं ये लोग. इसमें शार्क्स आएंगे और इलेक्ट्रिक रेज वगैरह भी आएंगे, ठीक है. और ये क्या है? नॉट प्रेडेशियस. देन सेवेंथ वन क्या है? इनका माउथ क्या है? वेंट्रली है प्लेस्ड, और इनका माउथ क्या है? टर्मिनल है. अब मैं तुम्हें फिगर से दिखाती हूँ माउथ. सी,
ये जो शार्क है व्हाइट वाला, इसका माउथ देखो, एक आगे की तरफ है, फिर दूसरा वाला माउथ क्या है, छोटा है, ठीक है। और नॉर्मली तुम, रोहू फिश इज देयर, शार्क, रोहू फिश, रोहू फिश, रोहू फिश, ओके, रोहू फिश इज नॉट देयर। सो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो रोहू फिश होती है उसका मुंह हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे आगे की तरफ, ठीक है। उसका दोनों का मुंह ऐसे से, ये जो माउथ है, सी ऐसे माउथ ही समझ लो। तो ये दोनों अगर बराबर पे हैं तो दैट इज व्हाट वेंट्रल माउथ, ऊपर दोनों की तरफ से ऐसे ऐसे खुलेगा। एंड शार्क का क्या होता है, एक ऐसे होता है, ठीक। सो वो क्या होता है, पहले नीचे जो है, ओके मैंने उल्टा बोल दिया, अगेन। कॉन्ड्रिक्टिस का जो माउथ होता है वो क्या है, वेंट्रली प्लेस्ड है, मतलब कि एक माउथ ऊपर ऊंचा है, दूसरा माउथ क्या है, नीचे छोटा है, और ऐसे खुलता है नीचे की तरफ से, ठीक है। माउथ नीचे की तरफ से खुलता है। लेकिन जो ऑस्टिक्टिस हैं, उनका माउथ कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, मतलब कि दोनों तरफ से खुलेगा, टर्मिनल है वो, ठीक। ऐसे दोनों खुलेगा। लेकिन शार्क का माउथ कैसे खुलेगा, सिर्फ नीचे की तरफ से वेंट्रली प्लेस्ड खुलेगा, ठीक। अंडरस्टूड अबाउट दिस, वेंट्रली प्लेस्ड एंड माउथ दोनों टर्मिनल हैं। Any doubt, Sun or Faika, in this? No. No, ma'am. Okay. Mouth is what ventrally placed ना, ventral and mouth क्या है यहाँ पे, terminal है। Then next one is what? अब देखो इनके फिन्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इनके जो कॉर्डल फिन्स हैं, अब इनके भी बॉडी में आगे के फिन्स को क्या हम लोग बोलते हैं, पेक्टोरल फिन्स, बीच के मिडिल को बोलते हैं पेल्विक, फिर नीचे आखिरी वाले को जो कॉर्डल फिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो आखिरी वाले फिन्स होते हैं कॉर्डल फिन्स, वो क्या होते हैं, हेट्रोसर्कल होते हैं। और ऑस्टिक्टिस वाले के जो आखिरी वाले फिन्स हैं, दैट इज कॉर्डल फिन्स, वो होमोसर्कल होते हैं, ठीक है। अब हेट्रो सर्कल होमो सर्कल क्या है, हेट्रो मतलब कि ऐसे, आखिरी का जो फिन्स है, हेट्रो सर्कल मतलब एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, और होमो मतलब दोनों ऐसे बराबर रहेंगे, ठीक। तो ये ऑस्टिक्टिस वाला है और ये कॉन्ड्रिक्टिस वाला है। इसका एक कॉर्डल फिन बड़ा रहेगा, दूसरा कॉर्डल फिन छोटा, और ऑस्टिक्टिस वाले में दोनों कॉर्डल फिन बराबर रहेंगे। ओके, सो लेट मी राइट इट ऑल्सो। कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन ये क्या है, हेट्रो सर्कल, हेट्रो सर्कल, एंड यहाँ पे कॉर्डल फिन होमो, ठीक। नाउ नाइन्थ, देखिए बड़ा कर लेते हैं। You will study these characters, no need to study the other characteristic। यहीं से तुम 17-18 पॉइंट बना के तुम खुद लिख सकती हो जनरल कैरेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, दे आर हैविंग व्हाट, ऑपरकुलम। अब ऑपरकुलम क्या होता है, ऑपरकुलम एक माउथ के पास की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस वन आर नॉट हैविंग दैट, एंड ऑस्टिक्टिस मींस बॉनी वन आर हैविंग ऑपरकुलम। सो ऑपरक्यूलम एब्सेंट, एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, एक्सेप्ट काइमेरा। काइमेरा इज अ फिश जिसके पास ऑपरकुलम होता है, एंड यहाँ पे ऑपरकुलम इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन यू कैन मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज कार्टिलेजिनस फिशेस, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, और एयर ब्लैडर ना होने की वजह से इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है। वो स्विमिंग रोक नहीं सकते, अदरवाइज देयर बॉडी विल स्टार्ट सिंकिंग इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक। But these Ostictis one, they are having the air bladder, and due to the presence of these air bladder, they can stop swimming. Understood? And air bladder का question भी बहुत बार आता है. So air bladder absent, and they need to swim constantly to avoid sinking. And यहाँ पे क्या है? Air bladder present है. Okay, so up to this, any doubt in these 10 features? Because अभी 4-5 I think और होगा features in the difference. Sidewise, अगर if you will study the difference only, you will be able to write many characteristics. ठीक है? तो any doubt in these 10 points? Okay, no doubt I suppose. Then we'll move forward. 10th, 11th, heart. Again, इनके पास 2 चेम्बर्ड हार्ट है, कार्टिलेजिनस फिशेस। इनके पास भी 2 चेम्बर्ड हार्ट है, लेकिन एक्सेप्शन इज देयर। जब एडवांस फिशेस का ऑस्टिक्टिस में पढ़ोगी, देयर विल बी अ क्लास, लंग फिशेस का क्लास है जिसके 3 चेम्बर्ड होते हैं। सो हियर 2 चेम्बर्ड हार्ट विद नो एक्सेप्शन, चेम्बर्ड हार्ट विद नो एक्सेप्शन। यहाँ पे 2 चेम्बर्ड हार्ट यहाँ पे भी हैं with exception of lung fishes. Lung fishes.
Okay, they are having what? Three chambered heart. Next, what? Fertilization. These cartilaginous one are having internal fertilization. These bony one are having external fertilization. So internal fertilization. Okay. Fertilization. Then external fertilization. Again fertilization के पास क्या आ जाएगा? डेवलपमेंट. सो एक्स लिंक तो दोनों के दोनों ही हैं, तो कुछ में क्या है वीवी पेरस है और कुछ इसमें सॉरी कार्टिलेजिनस ones are viviparous and these one are oviparous. Okay, viviparous means directly give birth to young ones and oviparous means egg laying. Oviparous. Next, these are okay, कोल्ड ब्लडेड तो दोनों ही हैं, नो डिफरेंस मीन्स पॉइकुलोथर्मल, ये भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को नहीं चेंज कर सकते ना ये कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज मेल इनके हैं. सी अब फिन जैसे हमने बताया कि कॉर्डल मतलब फिन्स भी कई तरह के होते हैं, तो इनका जो फिन है कार्टिलेजिनस वंस का, स्पेशली मेल में फिन ऑफ पेल्विक्स आर हैविंग वन क्लैस्पर्स, और उस क्लैस्पर्स को हम लोग बोलते हैं कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर्स, और ये क्लैस्पर्स और कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनस वाले में, एंड इस बोनी वाले में इट विल बी एब्सेंट. सो लेट मी राइट लाइक claspers as a copulatory organ. Okay, not organ. It is a structure. Structure are present where in the pelvic fin of males only. Okay, and here claspers absent. Maybe. By the way, no need. I'll not draw. Examples we can see from the slide. Only examples are left. So ये completely marine है तो इसमें कोई डिवीजन नहीं रहेगा. द एग्जाम्पल्स में इसमें भी क्या हो जाएगा, जो फ्रेश वाटर हैं उसको अलग क्लासिफाई करोगी, मरीन वाले का अलग एग्जाम्पल. फ्रेश वाटर लाइक लोबियोरोइटा, कटला, क्लेरियस लाइक मेगुर which we usually eat, and marine one will be what? Exocetus, flying fish है, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स की तरह उसका फिगर रहता है, एंड एक्वेरियम फिशेस भी इसी में आएंगी ऑस्टिक्थिस वाले में. So 14 characters I think are enough for this. If in the exam difference is asking, write the difference between conjunctives and ostichtis, you can write these 14 difference along with examples. And characteristic भी पूछेगा तो इन्हीं 14 difference को अगर तुम याद कर लोगी तो उनसे आराम से you can write the general characteristic also. So any doubt in this conjunctives and ostichtis one? Any doubt? If you are having, you can ask. Yes, Sana or Faika, are you having any doubt or should I? No. Okay, so then we will see the slide. Class Condyctis cartilaginous fishes. They have 600 species, including shark, rays, scapes. They are called cartilaginous fish due to the presence of cartilaginous exoskeleton. ठीक, मोस्टली मरीन होती हैं, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स होती हैं, बॉडी टेम्परेचर नहीं बदल पाती हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट. देन दे हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. अपने बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है, वी विल सी इन द एक्सक्रीशन चैप्टर. इनके में सॉल्ट वाटर कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हुए उस हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करती हैं. Body is laterally compressed and spindle shaped. Notochord is persistent throughout the life. Mouth is ventral in position. Okay, any? Yes, placoid scales and teeth are modified. They have strong jaw and fresh water. Gill slits are generally in 5 pairs. Some of them possess electric organs like torpedo. Okay, examples में बहुत अच्छे अच्छे होंगे. Trigon, poison sting. Heart is 2-chambered, 1 auricle and 1 tenoid scale, 1 equiventricle. Then paired and unpaired fins are present which are not supported by fin rays. Tail क्या रहेगा, heterocerial यानी कि unequal lobes. Then they are called as ureotelic animals. They secrete urea. Sexes are separate. Fertilization internal. Male usually have claspers on pelvic fin जो कि copulation में मदद करता है. Many of them are viviparous. Examples are most important. Characteristic ये पढ़ लेना, difference जो मैंने बताया है, you will be able to write all of these. So examples में you have to remember torpedo, torpedo one, scoliodon, shark or dogfish, of course carcharodon, great white shark. Then trigon is stingray. Then hammer-headed shark में हो रहा है largest rhiniodon. Then chimera exception है किसका, cartilaginous fishes का, इसमें operculum present होता है.
In general, operculum absent है cartilaginous fishes में, but this chimera is exception to this, so इसलिए important. Connecting link भी है between bony and cartilaginous fishes, okay, इसीलिए chimera important होगा. Now figure से these two stingray, they are having a poison in their sting. So कोई भी बाहर का enemy इनकी बॉडी को अगर टच करेगा, they will sting to their body and release their poison into the organism. तो ये इन लोग के पास सर्वाइवल एबिलिटी है. एंड इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पेडो, इनकी बॉडी यानी कि इन सारी फिशेस को अगर कोई टच कर रहा है तो दे विल गिव यू अ वोल्ट, इलेक्ट्रिक वोल्ट, एंड समटाइम्स दे कैन गिव यू इलेक्ट्रिक वोल्ट so hard that a person can die also. Okay, so special features हैं ये सब. Any doubt in this class? Okay, no doubt. So we will quickly see this slide also. Class conductus and ostectus. Okay. See, difference is also given this. I will not explain this one as I have already written everything. कुछ difference होगा इसमें. कोई doubt होगा, you can ask. Okay. Class conductus. Osteon means bone. Bony fishes, they include carps, catfishes, sardines, mackerels. ये सारे खाने वाले ज्यादातर के इसी में आएंगे. Then 2,500 species of bony fishes are found all over the world. Bony endoskeleton होता है, found in marine water as well as in fresh water. Cold-blooded animals हैं. Body streamlined है, facilitate करती है easily swim करने के लिए. Exoskeleton contain करता है dermal scale यानी कि cycloid या ctenoid one. Gills are covered with operculum, generally 4 pairs. Heart is two chambered with one auricle and one ventricle. Air bladders present होते हैं. Hydrostatic organs. फिर fins are paired and unpaired, which are supported by fin rays. Tail fin always homocircle. Then equal lobes या dies. Okay. Homocircle is mostly, these are amonotonic, they secrete ammonia. Sexes are separate. Fertilization is externally, mostly viviparous, and development is direct. Example में Lobiorohita. In higher classes, it will be an experiment for you to cut the Labiorohita and study their parts. So this one is important. Another one is Katla, Karla. It will be Katla only. Then Exocetus, flying fish. ये up to 100 meters तक का fly कर सकता है. This Exocetus, okay. Then Anguilla, eel, okay. बहुत ही स्लाइमी एंड बहुत ही क्विक स्विमर होते हैं ईल. बेटा एक्वेरियम फिशेस हैं. वॉलगोनिया, ये खाया जाता है, लाची. देन coelacanth, yes, this one is most important in this. Latimeria और coelacanth, oldest living vertebrate या living fossil. coelacanth ये कब इवॉल्व हुआ था? इन द मीजोजोइक एरा में. ओके, सो मीजोजोइक एरा से पहले का है ये लैटिमेरिया और सीलोकैंथ. ये ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट हैं, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल भी बोला गया, बिकॉज मेनी ईयर्स, आई थिंक मिलियन ईयर्स तो हो ही चुका होगा इसको. सो मीजोजोइक एरा से पहले का है ये. ओके, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एराज नेम राइट नाउ. 5 एरा हैं, तो मीजोजोइक एरा इज द मोस्ट एडवांस. उससे पहले आई थिंक जुरासिक या जुरासिक एरा है. सो टिपिकली बेसिकली ये क्या है? मिलियन ऑफ ईयर्स के पहले का है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल भी बोल रहे हैं. एंड लैटिमेरिया और सीलोकैंथ, इसका 2 नेम है, तो बाय एनी नेम इट कैन बी आस्क्ड. देन गैम्बूसिया इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन. व्हाई? बिकॉज इट इज अ लार्विवोरस फिश. इट फीड्स ऑन द लार्वा ऑफ मॉस्किटो. ठीक है, तो मॉस्किटोज के लार्वा की जब फीड कर रहा है, तो एक तरफ से क्या है, मॉस्किटोज आर वेक्टर डिसीजेस. तो जब फीड कर रहा है तो मॉस्किटो के लार्वा को खा रहा है. मॉस्किटो का लार्वा जब है ही नहीं, तो डिसीज विल बी लेस. ओके, सो एक तरफ से इट इज व्हाट, बेनिफिशियल टू ह्यूमंस. दिस गैम्बोसिया में बेनिफिशियल फिश है. सो दिस I will not explain as I have already written everything. I think up to here today we will keep the class. Any doubt in this class? We have studied the super class Pisces. In next class, the chapter will be finished. So after next, I think next to next Friday, what is the date? I'll take test of this chapter. Yeah, 11th of November. कोई किसी का प्लानिंग कहीं कुछ नहीं है? अगर है तो make yourself free on 11th November. I'll take test of this chapter on 10th of November. It will get completed. Tetrapoda is very small. एक chart I'll prepare, and that in that chart it will get completed within 15 minutes, I think. So any doubt?
In the next class I'll take test. Okay. Okay, you can say test के date अगर comfortable नहीं लग रहा है, I can extend it to 17th of November. Yes, Sana and Paika, should I take test on 17th or 11th? 17th. Okay, so 17th will be fine. And after this chapter, I'm going to start a cell chapter. So if you are wishing to study any other chapter, you can tell me. Okay. So cell chapter lock करते हैं, ठीक है? Otherwise, I can start the morphology and anatomy also. These two chapters are correlated. एक chapter पढ़ाना है तो दूसरा तो compulsory है ही. After this chapter, these two chapters, then cell will come. Decide fast, cell or morphology. Cell is fine. Okay.